ओम ज्ञानं तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सायगन्धगुणाथं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं पदां सायगन्धं शिवशाखाविदं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे पतितनां पावने वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभुपाद की teachings of Kunti Maharani, Srila Prabhupada, Swati Mataji, screen visible है Mataji? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज मेरी माताजी? हेलो। हाँ अब हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी, आप पढ़ पाएंगे माताजी? हाँ जी I have actual experience in this connection. I do not wish to narrate this whole story, but it is a fact that I received Krishna's special favor in this way. When I was 25 years old, my Guru Maharaj, my spiritual master, ordered me to go preach. But I thought, first of all, I shall become a rich man, and then I shall use my money to finance the preaching work. I had good opportunities to become a very rich businessman. An astrologer even told me that I should have become as rich as the wealthiest man in India. There were very good chances. I was the manager of a big chemical factory. I started my own factory and the business was very successful. But eventually everything collapsed. And in this way, I was forced into the position of carrying out the orders of my Guru Maharaj. When all my material assets were taken away, then I approached Krishna, saying, "You are the only shelter." Therefore, Krishna is a Kinchana Vitta, the property of the materially impoverished. When one is bereft of all material opulences, then one turns to Krishna. And now I am realizing that I am not lost but gained. Okay. His Grace Ashwani Kumar Prabhu. Yeah. So, welcome back everyone. This reading family, welcome everyone. So, to lose material opulence for Krishna's sake is not a loss. Rather, it is the greatest gain. When one becomes akinchana, having nothing to possess, Krishna becomes one only riches. Expressing this understanding, Narottam Das Thakur says, Haha Prabhu Nanda Sutta, Vrishbhanu Sutta Yuta, Karuna Karaha Ihibara, Narottam Das Kahe Na Theliya Nanga Paya, Tume Vena Ke Ache Amara. Krishna, but for you I have nothing to claim. I have no possessions. You are my only possession. So please don't neglect me. Yes, Naveen Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. This position is very nice when one does not depend on anything material but simply depends on Krishna. One has attained the first class position of Krishna consciousness. थोड़ा ऊपर चला गया, can you scroll that one? Therefore, Krishna is addressed as Akinchana Vitta. When one becomes materially impoverished, you are the only wealth. Namo Kinchana Vittaye Nivritta Guna Vrittaye. When one takes you as one of one's only possession, one immediately becomes free from the activities of the material nature. In other words, by accepting Krishna in this way, one attains the transcendental position of the Absolute. At Mara Maya. At that time, one becomes happy with you.
Krishna, you are happy with yourself, and one who surrenders to you becomes happy as you are. There is no difference between Krishna's body and Krishna himself. He is entirely self, entirely spirit. We, on the other hand, have a body that is different from ourselves. I am self, but I possess a material body. But when we actually become dependent on Krishna, who is completely self satisfied, we can also be self satisfied with Krishna. Yes, Dhananjay Prabhu. Kaivalya Pataye Namaha. The Mayadeva philosophers, the monists want to become one with the Supreme. The Supreme is self-satisfied, and they also want to be self-satisfied by becoming one with the Supreme. Our philosophy of Krishna consciousness is the same, but instead of becoming one with Krishna, we depend on Krishna. That is actual oneness. If we simply agree to abide by the orders of Krishna, have no disagreement with him, we are situated in actual oneness. Very good. Yes. Yes, His Grace Dashtar Prabhu. Yes, Prabhuji. The Mayavadi philosopher thinks, why shall I keep my individual separate existence? I shall merge into the Supreme, but that is not possible. From the very beginning, we are separate parts of Krishna. Krishna therefore says in Bhagavad Gita, my dear Arjuna, you should know that you, I, and all the persons assembled on this battlefield were individual in the past, we are individuals at present, and in the future we shall continue to remain individuals. Yes, Ishu Prabhu. Nityo Nityanam Chetna Chetnanam. Krishna is the supreme Nitya, the supreme living force. Among the innumerable living forces, we living entities, Jiva, are innumerable. Ananta. There is no counting how many we are. Similarly, Krishna is also a living entity, but he is the chief, the supreme living entity. That is the difference. One leader may have many followers. Similarly, Krishna, the supreme living entity, is the supreme leader, and we are subordinate, dependent living entities. That we are dependent is not very difficult to understand. If Krishna does not supply us food, we shall starve because independently we cannot produce anything. Eko bahunam yo vidya gati kaman. Krishna is maintaining everything, and we are being maintained. Therefore, Krishna is the real predominator, and we should be willing to be predominated. That is our natural conscious constitutional position. If we falsely want to become predominators in this matter world, we are in illusion. We must give up this illusion and always try to be predominated by Krishna. Then our life will be successful. Moving to the next chapter 11, the touch of superior energy. Yes, Swati Mataji. Manye tvam kalam ishanam anadinidanam vibhum samam charantam sarvatra bhutanam yan mitha kali. My Lord, I consider your Lordship to be eternal time, the Supreme Controller, without beginning and end, the all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Srimad Bhagavatam 1.8.28. Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. She knew perfectly well that Krishna is the primeval Lord who lives in everyone's heart as the super soul, Paramatma. Another name of the Paramatma feature of the Lord is Kal or eternal time. Eternal time is the witness of all our actions, good and bad, and thus resultant reactions are destined by Him. It is no use saying that we do not know why we are suffering. We may forget the misdeed for which we may suffer at this present moment, but we must remember that Paramatma is our constant companion and therefore He knows everything, past, present, and future. And because the Paramatma feature of Lord Krishna
destines all actions and reactions. He is the supreme controller also. Without his sanction, not a blade of grass can move. The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is the cause of suffering. The devotees of the Lord do not misuse their freedom, and therefore they are the good sons of the Lord. Others who misuse freedom are put into miseries destined by the eternal Kal. The Kal offers the conditioned soul both happiness and miseries. It is all predestined by eternal time. As we have miseries uncalled for, so we may have happiness also without being asked, for they are all predestined by Kal. मतलब No ये one वही है is कि there. हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस तो उसके लिए ज्यादा आपको हार्ड लेबर करने का जरूरत नहीं है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े रिच लोग हैं, मेहनत करते हैं बोले हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर अगर बच्चों से उन्हें दुखाना है तो वो तो दूसरे फॉर्म में वैसे भी आ जाएगा। तो मतलब अपना ड्यूटी करने का ज्यादा हार्ड लेबर का जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। हैप्पीनेस डिस्ट्रेस तो आता ही रहेगा, करेक्ट ना? हाँ जी। No one is therefore either an enemy or friend of the Lord. Everyone is suffering and enjoying the result of his own destiny. This destiny is made by the living beings in course for social intercourse. Everyone here wants to lord it over the material nature, and thus everyone creates his own destiny under the supervision of the Supreme Lord. He is all pervading, and therefore he can see everyone's activities. And because the Lord has no beginning or end, he is known also as the eternal time, Kal. बट ये काल फैक्टर उधर नहीं रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना? वहाँ पे काल का फैक्टर यहीं पे है, इसलिए मटेरियल वर्ल्ड जिसे बोलते हैं ना सर्व दुखाल्यम अशाश्वतम, ये अशाश्वतम इसलिए क्योंकि टाइम फैक्टर डाल दिया है इसमें। वहाँ पे टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो शाश्वतम है, नित्य है हमेशा। Okay, what is explained herein by the devoted Kunti is exactly confirmed by the Lord himself in Bhagavad Gita 9.29. There the Lord says, Samoham sarva bhuteshu name deveshu stina priya ye bhajanti tumam bhaktya maiteshu chapi aham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But one who renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. God cannot be partial. Everyone is God's son. So how can God favor one son above another? That is not possible. But human beings discriminate. We write, in God we trust. But one who trusts in God must be equally kind and merciful towards all living entities. That is God consciousness. Okay, thank you. I just wanted to comment on this previous one, प्रभु जी, वहाँ पर जो काल वाला ऑडियो डिस्कशन था, मैं वही सोच रहा था कि जो मटेरियल वर्ल्ड में है ना, जो डुअलिटी है, फुल ऑफ डुअलिटी, राइट? तो उसमें वहाँ पे हैप्पीनेस और उसके बाद होती है डिस्ट्रेस की, तो वहाँ हम देखते भी हैं हमारे रिलेशनशिप में, जैसे बेटे का आपने बताया था, तो सेम बेटा खुश दे रहा है और सेम बेटा ही दुखी का रीजन हो जाता है, वही पत्नी का है, वही पति का है, वो हर रिश्ते में देखा गया है। और आई एम श्योर हमने कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे वो एक्सपीरियंस किया ही होगा हर रिलेशनशिप में। तो इज इट बैड थिंग और गुड थिंग, आई डोंट नो, बट दैट इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट आई नो। Yeah, that is true. Thank you, thank you. Sure. कहाँ से पढ़ा था मैं? I envy no, नहीं तो हो गया। Krishna says, I have no enemies nor have I friends. Name dveshasti na priya. The word dvesha means enemy. We are envious of our enemies and friendly towards our friends. But because Krishna is absolute, even when he appears to be inimical towards some demon, he is actually a friend. When Krishna kills a demon, the demon's demonic activities are killed, and he immediately becomes a saint and merges into the supreme impersonal effulgence, the Brahma Jyoti. ये मुझे अच्छा लगा प्रभात कह रहे हैं, he immediately becomes a saint, और वो सही बात है, क्योंकि नहीं बनेगा तब तक ऊपर जाएगा ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, इसमें लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है, शिशुपाल को मारा, दुर्योधन मरे, और सब बोलते हैं कि उस समय कुरुक्षेत्र में जितने सारे लोग थे भगवान के उनमें मरे तो भगवान में ही चले गए। अब वो भगवान की ब्रह्मज्योति चले गए, तो उस एक मोक्ष की दृष्टि से देखा सकता है, हाँ उन्हें मिल गई है, बट डिवोटीज के पर्सपेक्टिव से तो वो
एक ब्रह्म ज्योति हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते ना. यू आर गोइंग इनटू मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड एनर्जी. yeah, that is correct bro. Yeah. इसलिए And काफी one more, sorry, हाँ, go ahead Ruji, go ahead नहीं, please. please, Please. please. नहीं मैं तो कुछ और बोल रहा था, इससे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप इसको कॉन्टेक्स्ट में फिनिश करिए, मैं फिर बोलूंगा. नहीं, मैं वही बोल रहा था कि जैसे कुछ संप्रदाय हैं ना जो प्रकाश की बात करते हैं कि सब कुछ लाइट है, उसमें देखना है, तो दे आल्सो सेंट ओनली उस सेंस में. बट उनका एक्चुअली ब्रह्म ज्योति भी जो है ना वो भी लिबरेशन में ही आती है, मतलब क्योंकि वो भी मटेरियल वर्ल्ड के बाहर की चीज है ना, वो भी तो वो भी मोक्ष ही है, पर वो लोएस्ट काइंड ऑफ मोक्ष है. और उस मोक्ष में हमेशा चांस है वापस मटेरियल वर्ल्ड में गिरने का, क्योंकि उसमें बताते हैं कि उसमें आपकी लविंग एक्सचेंजेस जो भी वहां जा रहे हैं उनकी लविंग एक्सचेंजेस पूरी होंगी नहीं. इट्स लाइक कोई व्यक्ति कोई बच्चा है और उसको ये रियलाइज हुआ कि बाहर बहुत डिस्टरबेंस है, तो उसने कमरे में अगर अपने आप को बंद कर लेगा तो वो इटरनली कमरे में नहीं रह सकता है ये सोच के कि बाहर शोर है, जब तक कोई लिविंग एक्सचेंजेस ना हो. बट अगर सपोज करो बाहर उसे शोर लग रहा है, बट उसे उस शोर में कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाए जिससे वो अपनी कह सके और उसे सर्विस मतलब यू नो दैट लिविंग एक्सचेंजेस उसके कंप्लीट हो सके, तो ही कैन स्टिल मैनेज इन दैट एनवायरनमेंट. तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में जो जा रहा है वो ब्रह्म ज्योति में फंस गया, वहां पे कोई लिविंग एक्सचेंजेस तो है नहीं, पर जो ब्रह्म ज्योति को पार करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहा है भगवान के पास, वहां पे फिर भगवान के साथ उसके लिविंग एक्सचेंजेस होने की वजह से वो वापस फिर मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता है. तो वैसे लिबरेशन है क्योंकि काफी टाइम तक ब्रह्म ज्योति में पड़ा रहेगा, बट देयर इज हाई चांस दैट वो ही वॉलंटरली कम डाउन टू मटेरियल वर्ल्ड. वैसे तो नहीं है कि उसे फेंक दिया जाएगा मटेरियल वर्ल्ड में, बट वहां से फिर वो वॉलंटरली नीचे मटेरियल वर्ल्ड में आना चाहेगा उस लिविंग एक्सचेंजेस की वजह से, वो हैंकरिंग रहेगी उसके अंदर. ये सुनने में रोज आप कुछ कह रहे थे. मैं तो इसी में भी बोल रहा था प्रभु जी, आई हैव नो एनी विजन नॉर हैव आई फ्रेंड्स, सो इसमें मेरे को इससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट एक जनरल अवेयरनेस के उससे आपने भी एक बार शेयर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, कि जो मटेरियल वर्ल्ड में अगेन हम जो देखते हैं कि जैसे आज मेरा आपसे फ्रेंडशिप है, हो सकता है कल रिलेशन खराब हो जाए, फिर पता चला फिर मेरा आपसे कल से अच्छा हो जाए, तो ये चलता रहेगा, ये भी हम एक देखते हैं. तो उसका लेसन क्या है उसमें कि हमें वी शुड ट्राई टू अवॉइड judging and saying any ill about any devotees or in general everybody, because आज आपका कुछ किसी कारण से रिलेशन खराब हो गया होगा, फिर कल प्रेम हो जाएगा, तो वो ये एक साइकिल है, जस्ट सो डिफिकल्ट. ये कुछ चीजें भगवान ने इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई है ना कि समझ नहीं सकते आप. ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस था प्रभु जी, हम और कुछ नहीं. गो अहेड प्रभु जी, हु इज अवर रीडिंग नेक्स्ट. Krishna say the Brahma Jyoti is one of the three features of the absolute truth. Vedanta पूरी आपकी आवाज ना लो आ रही है, शायद उधर कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ ऐसा काफी लो आ रही है. वेदांति तत्व विदास अभी आ रही है? हाँ बेटर है पूजी. तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. Bhagavatam, first canto, second chapter, 11th verse. The absolute truth is one, but it's perceived in three features known as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. The original complete feature of the absolute truth is Bhagwan, the supreme personality of Godhead, and his plenary representation is Paramatma, Kshirodakshai Vishnu, who is situated in everyone's heart. Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshe Arjuna Tishtati. The third feature of the absolute truth is Brahman, the all-pervading impersonal effulgence of the absolute. ये क्लियर है ना सभी को? ये भक्तों को बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको ना अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर को सब कुछ मान के बैठे हैं, तो उसमें हमें उनको क्लियर करना पड़ेगा. ये तो हमेशा ध्यान रखिए, मतलब तीन बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी हम लोगों को कि प्रभुपाद जो बता रहे हैं यहाँ पे तीन फीचर हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. भगवान मीन्स कृष्णा हिमसेल्फ, द एब्सोल्यूट ट्रूथ. परमात्मा जो सभी लिविंग एंटिटीज के हृदय में रहते हैं, जो एक एग्जांपल भी हम देते हैं, चिड़िया, पेड़ के ऊपर चिड़िया, दो चिड़िया बैठी हैं, एक चिड़िया आत्मा और एक चिड़िया परमात्मा. परमात्मा जो एक चिड़िया, जैसे एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को देखते रहती है पेड़ पे बैठ के, इसी तरह परमात्मा जो है वो आत्मा को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि क्या है और कब मित्र मुड़ के देखेगी, तो दैट इज परमात्मा.
और जो ब्राह्मण है वो है impersonal feature of the Lord. तो इस material universe में, spiritual universe में everything is working as it is because there is Lord's energy in the impersonal form. So that is a third feature of the impersonal form of the Lord. तो कई बार लोग क्या impersonal की बात करेंगे, वो कहेंगे कि impersonal ही सब कुछ है. कुछ लोग बोलेंगे जब परमात्मा है ही अंदर तो आप भगवान के बारे में क्यों बात कर रहे हो, है ना. और डिवोटीज हमेशा भगवान के बारे में बात करेंगे. Yes, please. The absolute truth is equal to everyone, but one will realize the absolute according to the way one approaches him. Ye yatha mam prapadante. According to one's capacity for understanding, the absolute truth is revealed either as the impersonal Brahman, as a localized Paramatma, or ultimately as Bhagavan. Yeah. Issue Prabhu. Explain this by an example. We may sometimes see hills from our room, although we may not see them distinctly. In Los Angeles, there are many hills, but when we see the hills from a distant place, they look like something cloudy. However, if we go further towards the hill, we shall find that there is something distinct, a hill. And if we go all the way to the hill itself, we shall find many people working there, many houses, streets, car, and so many varied things. Similarly, when one wants to know about the absolute truth by one, I shall conduct research to find absolute truth. One will have a vague, impersonal idea. Then, if one goes further and became a तो impersonal meditator, idea मतलब समझ गए ना. मतलब impersonal idea से मतलब है कि भगवान का impersonal feature जो इस पूरे संसार को चला रहा होगा. तो अगर कोई सोचेगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में भगवान का अप्रोच करना है तो पहले से स्टार्टिंग में impersonal feature का आइडिया आएगा. वो प्रभुपाद बता रहे हैं. फिर वो मेडिटेशन करने बैठेगा तो क्या होगा. तो इस तरह से वो ठीक है ना. मतलब कनेक्ट हो पा रहा है ना. पुराने पैसे से कनेक्शन है. right, Prabhuji. ये वाली लाइन भी अच्छी लगी मुझे प्रभुपाद की. Similarly, when one wants to know the absolute truth by one's tiny brain and things, one's tiny brain and things, मतलब प्रभुपाद sarcastic tone में कितना अच्छे से समझा रहे हैं. Yeah. Then, if one goes further and becomes a meditator, one will find the God is situated within one's heart. ध्यान ध्यान व्यवस्था तद गतेना मनसा पश्यन्ति yam yogina. Real yogis see the form of Vishnu within the heart by meditation. The devotees, however, meet the Supreme Person face to face, just as we met face to face and speak face to face. The Supreme Personality of Godhead orders, supply me this, and the devotees directly serve the Lord by supplying what he wants. Thus, there are different realization of absolute truth, and although he is equal to everyone, it is up to us to understand him according to the advancement. Therefore, Kunti says, Samam Kartena Sarvate. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The word Charanta means moving. The Lord moves everywhere, within and without, and we simply have to make our vision clear so that we may see Him. By devotional service, we can purify our senses so that we may perceive the presence of God. Those who are less intelligent simply try to find God within, but those who are advanced in intelligence can see the Lord both within and without. The yogic system of meditation is actually meant for those who are less intelligent. One who practices meditation in yoga must control the senses. Yoga indriyas samyama. Our senses are very restless, and by practicing the different asanas or sitting postures, one must control the mind and senses so that one can concentrate upon the form of Vishnu within the heart. This is the yoga system recommended for those who are too much absorbed in the bodily concept of life. However, because bhaktas, devotees, are more advanced, they do not need to undergo a separate process to control their senses. Rather, by engaging in devotional service, they are already controlling their senses. For example, if one is engaged in worshipping the deity, cleansing the temple, decorating the deity, cooking for the deity, and so on,
one's senses are already engaged in the service of the absolute truth. So where is the chance of their being diverted? Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. Bhakti devotion service simply means engaging our senses. Senses means Rishikesha, in the service of the master of the senses, Rishikesha. Rishikesha. Now our senses are engaged in sense gratification. I am thinking that because I am this body, I must satisfy my senses. In fact, however, this is a contaminated stage of life. When one comes to the understanding that he is not this body, but a spiritual soul, part and parcel of God, he knows that his spiritual senses should be engaged in the service of the supreme spiritual being. Thus, one attains liberation, means mukti. It's Clear नहीं है? 7:26. Should we continue? हाँ, अच्छा time okay, we'll stop this. So we can start with the learning or realizations or any questions we have. ओके, एक तो मैं थोड़ा सा क्विकली अपडेट दे देता हूँ उदित को कि आप एक बार पूछेगा कनक माता जी कर पाएंगे, तो ये हम लोगों ने अटेंडेंस का सर्विस कैसे शुरू करना है। ओके, उसके लिए उनको भी रेगुलर आना पड़ेगा, तो वो रेगुलर अटेंडेंस हमें चाहिए कि कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, ओके, ताकि हम सब लोगों के लिए एक एक रहेगा देखने के लिए कि एवरी वीक हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना मीटिंग में हम इस मीटिंग सेशंस में आ रहे हैं, और मंथली भी फिर एक रहेगा कि कितना परसेंटेज हम आए, कितना अटेंटिवली सुने। उसमें मैं बताऊंगा उनको, एक लिसनिंग मोड वाला भी डाल देंगे, इससे पता रहेगा कि कितना हम अटेंटिवली पार्टिसिपेट किए, तो उससे हम सब लोगों के लिए एक चेक रहेगा। दैट इज वन। सेकंड अपडेट ये है कि इधर हम कुछ स्पीकर से टच में हैं, तो एवरी वीक वी विल हैव वन स्पीकर। मैंने चेक भी लिखा था वैसे, तो वो आएंगे, और उस समय मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग सब ट्राई ये करें कि हम उस दिन जरूर आए जिस दिन स्पीकर आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि स्पीकर आ रहे हैं और हम लोग अटेंडेंस 1 या 2 ही हैं, 4 ही लोग हैं। हम ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा सभी लोग उस समय प्रेजेंट हो, और उस समय थोड़ा सा एक्टिवली हम उसमें पार्टिसिपेट भी करें। तो जो स्पीकर आएंगे वो बुक से तो नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, उस समय हमारा सिर्फ ये पर्पस होगा कि स्पीकर अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक लेके और उसको प्रेजेंट करें, ताकि हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी समझे, उनके रियलाइजेशन से भी हम मोटिवेशन गेन करें। तो उसके लिए तो देखो आप थोड़ा सा सब डिवोटी से एक वोट लेके कौन सा दिन सूट करेगा वो सबसे पूछ लीजिए। तो कुछ स्पीकर तो हैं, शायद उनको हम एक दिन बताएंगे तो आ जाएंगे, और शायद 1-2 स्पीकर जो है उनका थोड़ा रहेगा ऑन ऑफ, तो उनको भी धीरे धीरे फिर फिक्स कर देंगे। और एक बार डिवोटीज से आप एक बार टच बेस करके चाहे ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए, और फिर देख लीजिए कौन से दिन स्पीकर को बुलाना शुरू ठीक रहेगा, क्योंकि वो दिन सबके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए कि सब लोग कंफर्टेबली आ सकें, और आना सबका उसमें बहुत जरूरी है। इंटरनली तो मैनेज कर लेते हैं, बट स्पीकर आएगा तो वी वांट कि एवरीबॉडी शुड बी देयर। सो दीस आर द 2 अपडेट्स फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, तो हम अभी इस बारे में दोनों अपडेट जो मैंने दिए हैं इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक कमेंट प्रभु जी, इस टॉपिक पे जो आपने बोला, इसमें अगर स्पीकर इंडिया से ज्वाइन कर रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्पीकर है तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा वो, क्योंकि दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर फॉर देम। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। तो इसमें ऐसा करेंगे प्रभु जी, मैं सोच रहा था कि क्योंकि हम लोग का यूएस टाइमिंग में शायद देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ के स्पीकर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ इजी रहेगा, है ना, क्योंकि इंडिया में थोड़ा स्पीकर की एंगेजमेंट कुछ ज्यादा ही रहती है, तो फिर करेक्ट। उनके साथ मैच बनाना मुश्किल हो जाएगा। और एक प्रपोजल है, अगेन यू कैन वोट प्रभु जी, जैसे आप पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यूजुअली फ्राइडे एंड सैटरडेज आर टिपिकली बिजी और वी हैव समथिंग और अदर गोइंग ऑन, तो संडे इवनिंग हियर 8:30 थिंग्स आर काइंड ऑफ वी आर बाइंडिंग अप थिंग्स, राइट? तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, बट व्हाटएवर एवरीबॉडी वर्क्स आउट, या इट जस्ट अ प्रपोजल, संडे इवनिंग 8:30। या मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ा ऐसा ट्रेडिशनल एंगेजमेंट तो बैठी है। ठीक है, तो उदित को एक बार आप पूछ लीजिएगा सबसे। ओके ब्रदर, कि सैटरडे संडे तो मुझे भी थोड़ा, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, थोड़ा लगता है सब। फ्राइडे सैटरडे संडे है। ओके, चलेगा। तो ये हो गया। और
जितने भी स्पीकर से हम बात कर रहे हैं उन सबसे ये बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके प्रेजेंट कर सकते हैं. देयर इज नो प्रायोरिटी एज सच, एंड एनी टॉपिक फ्रॉम भगवद गीता, भागवतम और इवन चैतन्य चैतामृत आल्सो वी आर फाइन विद. ठीक है, ओके. या तो बुक से मुझे वो लास्ट पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा वो एकदम से मैं सोचा था वो शायद डिस्कस भी करेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम लोगों को सेंस कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है. डिवोटीज दोज आर कंटिन्यूअसली एंगेज इन कृष्णा सर्विस, उनका सेंस तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है. एक बार मुझे याद है एक डिवोटी सुना रहे थे कथा में कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि हाउ डू यू कंट्रोल लस्ट, तो प्रभुपाद बोले देयर इज नो टाइम फॉर लस्ट. मतलब you keep yourself so much engaged in Krishna's service that you don't remember lust at all. और वो फिर पता ही नहीं चलता, मतलब because you are getting higher taste तो automatically lower taste की तरफ ध्यान नहीं जाएगा. जैसे अगर आप too much बहुत ऑफिस में काम करें तो आपका लस्ट की तरफ ऑटोमेटिक ध्यान जा सकता है, भगवान की सेवा में आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली if you are taking higher taste. एक बुक है what is that book जो डिवोटी के ब्रेड करके जो नाम है, क्या नाम है, सॉल्टेड ब्रेड. सॉल्टेड ब्रेड जो बुक है तो उसमें बताते हैं वो जो उसमें जो दो डिवोटीज की स्टोरी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, फिर उनको कैसे पुलिस ने टॉर्चर किया. तो उसमें वो जो दोनों डिवोटी थे वो पहले कुछ स्पिरिचुअली कुछ ट्राई कर रहे थे. तो पहले वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, 2-3 महीने तक ड्रग्स लेते रहे. उनको लगा कि ड्रग्स से जो हम नशे में जा रहे हैं वो एक्चुअली हम ट्रांस में जा रहे हैं, समाधि में हम लोग जा रहे हैं. तो उसमें जो एक डिवोटी थे तो उस समय कृष्णा कॉन्शियसनेस को गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो चुपके प्रचार हो रहा था. तो उसमें से जो एक डिवोटी थे वो उस कृष्णा कॉन्शियस मूव जो एक सेंटर था उसमें चले गए वहां पर, और वहां पे वो चुपके से रहने लगे और डिवोटीज के साथ फिर वो मंगल आरती और वो सब अटेंड करते. तो इसमें जब दूसरे डिवोटी ने उनका हालचाल पूछने के लिए वहां फोन किया कैसे हैं क्या है, तो उन्होंने बोला यार यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा है, इस्कॉन का है, सब है. तो बोले तो बात में ना उसके बाद उन्होंने दूसरे जो डिवोटी थे उन्होंने हिचकिचाते पूछा यार तुम ड्रग्स अभी भी लेते हो क्या. तो जब उन्होंने पूछा ना तो वो जो डिवोटी सेंटर में ऑलरेडी रह रहे थे इस्कॉन के, वो उनको रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली भूल ही गए थे ड्रग्स भी, जबकि 3 महीने तक एडिक्टेड थे. पर सेंटर में शिफ्ट होने के बाद वो इतना सब सर्विसेज में और उसमें इतना एंगेज हो गए थे, हायर टेस्ट ले रहे थे कि वो भूल ही गए कि उनको ड्रग्स भी लेना है. मतलब लोअर टेस्ट की तरफ जाने की बात छोड़ो, अब व्यक्ति भूल ही जाता है कि वो भी कोई चीज है. तो आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ती. सो आई लाइक दिस पॉइंट ऑन द लास्ट पैराग्राफ वेयर Prabhupada is mentioning that what to talk about control, devotees always engage in Krishna service. Yes, thank you. थैंक यू. प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे उसमें हमने बुक में पढ़ा था कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन, है ना. वो कुछ क्या बता रहे हैं, कृष्णा इज इक्वल टू एनवी एवरीवन, मतलब ऑल लिविंग एंटिटीज इक्वली काइंड एंड मर्सीफुल टुवर्ड्स ऑल लिविंग एंटिटीज. अच्छा. हाँ. प्रभु जी जैसे अगर but then he is partial also, है ना. यस प्रभु जी. एंड वो ऐसा लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो बोल रहे हो कि आप तो इक्वल हो सबके लिए, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं जो मुझे डिवोशनल सर्विस करता है उसके लिए पार्शल हो जाता हूँ. हाँ जी प्रभु जी. मतलब ये ऐसे है कि जैसे एक फादर है तो वो क्या है ना कि वो सब बच्चों के लिए एक समान है, सबको एक समान सब सुविधाएं सब कुछ है. बट फिर भी उसमें से अगर कोई एक बच्चा होगा जो फादर की डेली सर्व कर रहा होगा, जैसे डेली रात को आएगा फादर को खुद खाना खिलाएगा लेट से, और खुद उनके पैर दबाएगा, उनकी सेवा करेगा, सुबह उठ के भी उनको नाश्ता कराएगा, हमेशा उनसे पूछेगा, टच में रहेगा, तो फादर का ऑटोमेटिकली उसकी तरफ हट जाएगा ना ज्यादा. तो इन अ वे एज अ फादर ही इज इक्वल टू एवरीवन, but one who is rendering service to the father, he has some inclination towards that son. तो ये वैसे ही है, कृष्ण कह रहे हैं वैसे तो मैं इक्वल हूँ सब लिविंग एंटिटी के लिए, क्योंकि सभी मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं. But if any part and parcel is doing devotional service to me, I have some heart connected to him. इसलिए थोड़े फेवर भी करते हैं भगवान उसको, थोड़े नहीं मतलब बहुत फेवर करते हैं. मतलब लोग मतलब अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो लोग ये भी कह सकते हैं ना प्रभु जी, जैसे पूरी अर्थ में जो रिसोर्सेज है उसका बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. किसी देश में भुखमरी है, किसी देश में अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, तो वो सब तो नेचुरल है. तो वहाँ भी थोड़ा नेचुरल नहीं है रिवोल, ये तो भगवान ने तो अबंडेंस दिया है, उस अबंडेंस को हम खत्म कर दिए तो भुखमरी तो हमारा देना हो गया ना. आप समझ रहे हो. जैसे पता नहीं मैं इस क्लास में डिस्कशन हुआ इस बारे में कि नहीं, जैसे जो कंट्रीज है ना जहाँ पे किसी को खाने की दिक्कत होती है, कैसे भूटान जैसी कंट्री है शायद, तो
हैप्पी, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। वो क्या करते हैं, वो राजा के पास जाके बोलते हैं, राजा उनको दे देता है, ठीक है ये लैंड है, ये छोटी सी आपकी झोपड़ी हो गई, ये भी है, उगाओ खाओ, कोई क्या दिक्कत है। उनको तो कभी भुखमरी नहीं आई। भुखमरी किन देशों में आ रही है, जिनकी ग्रेडीनेस ज्यादा है, जो ज्यादा दबाना चाह रहे हैं, या फिर जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो वीक कंट्री से दबा ली। जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं, तो क्या होता है कि डेवलपिंग में फिर भुखमरी आ जाती है। तो आउट ऑफ ग्रीड इफ समथिंग हैपनिंग, तो कहावत नहीं है कि द वर्ल्ड हैज लॉट टू फुलफिल एवरीवन्स नीड, बट देयर इज वेरी लेस टू इवन सेटिस्फाई वंस ग्रीड। सिर्फ एक व्यक्ति ग्रीड सेटिस्फाई करने के लिए भी संसार में कमी है, बट सबकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ है। तो इसमें बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए खाने में दिक्कत नहीं है, खाने का जुगाड़ हो जाएगा, पर करोड़पति बनने के लिए बहुत मेहनत है। तो ऐसी भक्ति का भी है, भक्ति में आने के बाद आना फिर भी इजी है, फिर भी मैनेज हो जाएगा। भक्ति में टिके रहना भी ठीक है, आप आए सेवा करते रहिए, 16 माला ठीक है टिके रहेंगे। पर जिसको भक्ति में और एडवांस करना है तो उसे और करना पड़ेगा आगे। भक्ति में फिर ये इस तरह से आ जाता है। एनीवे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Anyone wants to share anything or discuss or have some questions, please ask. I think चलेगा। सभी एंथुसियास्टिक रहिए रीडिंग ग्रुप के लिए। इसमें थोड़ा स्पीकर आएंगे तो थोड़ा चेंज आ जाएगा फिर। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you for joining. Hare Krishna. Thank you so much for joining.